Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 30 September 2021 and I am teaching you chapter number 14 and name of the chapter is the Deccan Plateau. Okay. Now let do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we are doing long question answer of the chapter number 14, that is Deccan Plateau, and we have completed first two question in our class work copy, that is write any 4 points why Deccan Plateau is important, and second question, describe the climate of a Deccan Plateau. So in today video we will start with question number 3, describe the Central Highlands. Describe the Central Highland. So student, when we are talking about the Central Highlands, it includes Malwa Plateau in the center and the Chota Nagpur in the east. Okay, because the plateau is divided into two parts due to the river Narmada, which is flowing from east to the west. ठीक है, Narmada river, due to Narmada river the plateau is divided into two parts. One part we say it as a Central Highland part and another part we say it as a Deccan Plateau. Okay, so and what are the rivers? The river Chambal, Betwa and Son originate in the Central Highland and they all flow from they flow northward. ठीक है, and join the Ganga and Yamuna, and I have already explained you the Narmada and Tapi are the river which begin in the Vindhya hills and flow westward, and their water falls into the Arabian Sea. So note down the answer. The Central Highland Central Highlands include the Malwa Plateau in Central India and the Chota Nagpur Plateau in the
east. The river Chambal Betwa and Son originate in the central highlands they flow northwards and join they flow northwards and join the Ganga and the Yamuna. The Narmada and the Tapi rivers begin in the Vindhya Hills and flow westwards into the Arabian Sea. Okay, so the central highlands include the Malwa Plateau in central India and the Chota Nagpur Plateau in the east. The river Chambal, Betwa and Son originate in the central highlands and they flow northwards and join the Ganga and the Yamuna river. The Narmada and Tapi rivers begin in the Vindhyas hills and flow westwards into the Arabian Sea. So this is the complete answer. What question is given in your copy? The vast area and variety in the soil of the Deccan Plateau benefit the people of this area how? So let's discuss this question. The vast area and variety in the soil of the Deccan Plateau benefit the people of this area. How they benefit? First is two types of soil are found here, black soil and red soil. Black soil is good for the cultivation of cotton and oil seeds. Okay, we are not writing this answer in the copy, classwork copy, but we are just discussing how they benefit. So benefit is that the black soil and the red soil is found in this plateau, and black soil is very good for the cultivation of cotton and oil seed. Second,
right direct soil is suitable for the groundnuts, sugarcane and millet. Okay, thick forests provide good medicines, fruits. Okay, or and the hilly areas have large plantation of tea, coffee, cinnamon and pepper. Okay, so these are the things which are present here, and that is the reason they benefit the people of this region, that is the Deccan Plateau region. Now so one homework for you, it is given on page number 91. You will buy physical map from the market. Is it clear? You will buy one physical map from the market, and on this map what you will mark, it is given rivers of the Deccan Plateau and Malwa Plateau. So this you have to mark on the physical map of India. You can take a screenshot. This question you have to complete in your classwork copy. This is your homework. On a physical map of India, mark the following. Rivers of the Deccan Plateau. Second, Malwa Plateau. Okay. When you have to do this homework, you will buy one map, physical map of India, and on that physical map of India, the rivers of the Deccan Plateau you will mark, and rivers of the Malwa Plateau. When we are talking about the Malwa Plateau, so the rivers are Chambal, Betwa and San. Okay, and you can also show Narmada and Tapi river also. Okay, and when you will show the rivers of a Deccan Plateau, okay, so you will show the following rivers on their map, that is Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri. Okay, so these rivers you will show or you will mark on the map. Okay, so student, today we have completed this chapter. Now we will start a new chapter, that is chapter number 15. Okay, so before starting this chapter, let's discuss some important points on which are given on page number 90, things to remember, and in the next video we will start a new chapter. So the first point is Southern Plateau lies
south of the northern plains. It is triangular in shape. When I explained you the chapter, then I have already explained you that it is triangular in shape. That is the reason we say it as a peninsula. It means the part of the land which is surrounded by water from three sides. In the west, Arabian Sea; in the east, Bay of Bengal; and in the south, Indian Ocean. Second point is given, the southern plateau is surrounded by hill range on all side. ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या है, हिल रेंज है, ये मैंने मैप में भी दिखाया था. और जो वेस्टर्न वाले जो घाट्स हैं बेटा, वो क्या है, कंटिन्यूस हिल रेंज है. और जो हमारे ईस्टर्न वाले घाट्स हैं, वहाँ कंटिन्यूस हिल रेंज नहीं है. ठीक है, जगह जगह पे ब्रेक है. एंड इट इज वन रीजन इज ड्यू द रिवर्स, ड्यू टू द रिवर्स which flow from west to east, and they are forming the deltas. और that is the reason जो आपकी बेटा ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न वाला जो सीन है वो ज़्यादा ब्रॉड है. ठीक है, अरावली हिल्स, विंध्यास है. ठीक है, और नीलगिरीज, अन्नमला हिल्स, कार्डमोम हिल्स, ये सारी की सारी पूरी क्या है, हिल रेंज है. ठीक है. Next है रिवर नर्मदा divide the southern plateau region into two parts. In the beginning of the chapter, I explained you that this plateau is divided into two parts, that is the central highland and Deccan plateau, and this is due to the river Narmada. Okay. Next point is the chain of mountain on the western side of the plateau are called western Ghats. जो वेस्ट की तरफ जितनी भी हिल्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न घाट्स बेटा, और जो ईस्ट की तरफ जितनी हिल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट्स. तो वेस्ट वाले हिल्स हो गए वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट वाले हिल्स हो गए ईस्टर्न घाट्स. ओके. नेक्स्ट है द हिल्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्लेटू आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. नेक्स्ट है द रिवर सच एज महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी फ्लो ईस्टवर्ड इन द बे ऑफ बंगाल. ये सारी की सारी रिवर्स का वेस्ट से स्टार्ट हुई हैं और ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं. और लास्ट में इनका जो वाटर है किस में फॉल हो जा रहा है, आफ्टर फार्मिंग द डेल्टास, इनका वाटर किस में चला जा रहा है, आपका बे ऑफ बंगाल में. क्योंकि यहाँ ये सारी रिवर्स क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा रिवर की. ठीक है, इनका वाटर गंगा रिवर में जाता है, गंगा का वाटर फर्दर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है. तो ये सारी की सारी आप ये भी कह सकते हो, ये डेक्कन प्लेट्यूज वाली वो रिवर्स हैं जो गंगा की क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियाँ. नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑयल सीड. सो टू टाइप्स ऑफ सॉइल हमने यहाँ देखी, हमें दो तरह की सॉइल मिलती है. एक अब मैंने डिस्कस की थी ब्लैक, अनदर इज रेड. Black soil is good for growing cotton and oilseed, and when we are talking about the red soil, it is very suitable for the groundnuts, sugar and millet. Next है hilly area है plantation of tea, coffee, rubber, pepper, cinnamon. So देखो hilly area है, ट्री प्लांटेशन जो है और कॉफ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, and cinnamon, rubber and pepper, these are the things which we get. क्लाइमेट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू का क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर. इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडरेट क्लाइमेट स्टूडेंट. मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स इन द मंथ ऑफ और इन द सीजन ऑफ समर it is not very hot, and in the season of winter it is not very cold. That is the reason we say that the climate of a Deccan Plateau is moderate climate. ठीक है, और क्लाइमेट आपको ऑलरेडी मैंने क्लास 4 में बताया था, क्लाइमेट वो कंडीशन होती है जो हजारों साल से चेंज नहीं हुआ, सेम चला आ रहा है. ठीक है, और वेदर जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम, हावर टू हावर, डेज टू डेज, वीक टू वीक्स, मंथ टू मंथ. और जब एक तरह का वेदर कुछ समय तक रह जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं. लेकिन क्लाइमेट क्या है, ये हजारों साल से एक जैसा चला रहा है. जैसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे तो ये हॉट एरियाज हैं. अगर हम लोग जम्मू कश्मीर वहाँ
की बात करेंगे तो ये एरियाज क्या कोल्ड है, यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।